Bismillahirrahmanirrahim. Subject Language and Communication. I am Gulfam Nawaz, lecturer in Special Education, University of Education, Lahore. Dear students, I welcome you to the second lecture of the subject Language and Communication Skills. And this lecture is about Introduction to Speech and Language. First of all, as our tradition, we use this chapter with an ayat from the Holy Quran that those who believe and whose hearts find comfort in the remembrance of God, surely in the remembrance of God, hearts can find comfort. Surah Al-Rad, Ayat 28. Surely in the remembrance of God, hearts can find comfort. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. We often hear this ayat. Then there is a prayer of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. O God, I seek your refuge from useless knowledge and a heart without fear. Next slide is very famous quote from Jim Rohan. He says that we must all suffer one of two things: the pain of discipline or the pain of regret or disappointment. So we have two options and we have to choose one of them. One is the pain of discipline, and with the discipline we can achieve our aim in life or our goals, or the pain of regret or disappointment, and you know the price of disappointment and regret. Now I would like to talk about introduction to speech, because this subject is about language and communication skills, and speech is its unit. Like if we want to learn counting, so then we have to learn about its units, tens, thousands, etc. So here is speech is the unit of, if we study any society or a culture, then individuals are the units of that this is the basis of anything. So speech is the basis of language as well as communication. So what is speech? We introduce it formally here. And unit first, development of speech and language skills in children. As such, these are not required in the outline, but if we want to understand this whole subject, we have to understand first of all speech and language. So speech is a neuromuscular process of producing speech sounds. So speech वही है जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ. Sounds with the help of articulators at exhalation phase. Exhalation, inhalation, these are processes of respiration. कि जब हम सांस लेते हैं तो अगर हम सांस अंदर फेफड़ों में लेके जा रहे हैं तो दैट्स इनहेलेशन, और जब हम बाहर की तरफ एक्सेल करते हैं, जब हम फेफड़ों से हमारे सांस बाहर को आती है मुंह के रास्ते, दैट्स एक्सेलेशन. सो स्पीच इज़ अ न्यूरोमस्कुलर प्रोसेस. इसमें न्यूरॉन्स और मसल्स दोनों शामिल होते हैं और डिफरेंट आर्टिकुलेटर्स होते हैं जो कि हमारे फेरिंक्स यानी कि जो गले का वो हिस्सा जो कि आवाज़ पैदा करने के साथ जिसका ताल्लुक है. स्पीच साउंड्स विद द हेल्प ऑफ आर्टिकुलेटर्स एट एक्सेलेशन फेज. Speech is spoken language, or speech is a verbal means of communicating. It is not only face-to-face human communication. We use gestures, face-to-face facial expressions, body postures to send messages. And you know, when we are talking to other persons face-to-face, even our non-speech जो gestures होते हैं,
they carry our approximately 60% of the information. So speech is producing the sounds. This is the process which is related to produce sounds. So what is speech production and what are its components? We are going to talk about these. So this is a process that in which thoughts are translated into speech production, that we think and then we select some of the words and we organize them, and we organize them in grammatical pattern that often we use rules, and then we articulate or we produce that sound, and thus we produce speech. कि पहले हम सोचते हैं, जब हम सोच लेते हैं कि कोई चीज़ जो हमने बयान करनी है, तो फिर हम उसके हवाले से आवाज़ें जो है ना वो तरतीब देते हैं कि हमने कब क्या बोलना है. सो हेयर आई एम स्पीकिंग फॉर दिस लेक्चर and I am producing sounds for you. This whole process is speech production. The production of spoken language involves three major levels of processing: conceptualization, that's related to concept formation; formulation, it means to formulate or to arrange something; and articulation, आवाज़ का पैदा किया जाना. So we discuss these in detail in the next slide. Conceptualization is the first process of is the first component of the process of speech production, and it is also known as conceptual preparation, and we use our desired links to produce speech, and in which the intention to create speech links a desired concept to the spoken words to be expressed. That first of all we intend, हम इरादा करते हैं कि हम कुछ बोलें. So pre-verbal intended messages are formulated that specify the concepts to be expressed. So concept, हम कहते हैं जी फलां सब्जेक्ट में जो है ना वो मेरे concepts बहुत अच्छे हैं. So that concepts are we mean that we are thinking about that subject very comprehensively and very easily, that we are understanding or comprehending that subject with very ease. So second component of speech production is formulation, so in which linguistic form required for the expression of the desired message is created. So in it we use grammatical encoding, that we use grammatical rules and breaking the words into syllables to be produced in overt speech. Overt and covert are two words. Overt means which appear to us, यानी जो ज़ाहिर होते हैं, तो उन syllables में हम इसको तकसीम कर लेते हैं. The final part of the formulation stage is phonetic encoding. So we have used grammatical encoding, as well as we also broken the words into syllables. Then we formulate phonetic encoding, that we produce sounds. This involves the activation of articulatory gestures dependent on the syllables selected in the morphophonological processes. So morphemes are the basic words that किसी भी ज़ुबान की कुछ रूट वर्ड्स होते हैं, तो उनसे जो उनकी जो स्टडी है वो मॉर्फोलॉजी है, एंड द स्टडी ऑफ साउंड्स इज़ फोनोलॉजी. सो हम उन दोनों चीज़ों को देखते हैं कि किसी वर्ड में अगर मैं वर्ड ही बोल रहा हूँ तो इसमें WORD हमें जो है ना वो कुछ जो है ना वो अल्फाज का कुछ अल्फ़ाबेट्स का होना ज़रूरी है, जो कि हमें पता चलता है अच्छा जी ये इसकी रूट वर्ड्स हैं. तो इन सब को जो है ना हम सेलेक्ट करते हैं कि हमने क्या क्या बोलना है और कैसे कैसे बोलना है. फार्मूलेट करते हैं, उसको तश्कील देते हैं, कोई शक्ल अता करते हैं.
creating an articulatory score as the utterance is pieced together and the order of the movement of the vocal apparatus is completed. So vocal apparatus means जो हमारे गले में vocal cords हैं जिनके लिए जो इनको हम बोलने के लिए कि जब हम एक्सेल करते हैं तो वो फड़फड़ाते हैं हमारे गले में जो आर्टिकुलेटर्स हैं वोकल कॉर्ड्स हैं तो उनसे हम जो है ना वो आवाज़ों को फार्मूलेट करते हैं तश्कील देते हैं सो थिंकिंग इज़ अ प्री स्टेज उसके बाद वही यानी कि कंसेप्चुअलाइजेशन की हम जब बात करते हैं फिर उसके बाद हम उस स्पीच को साउंड को ग्रामेटिकल एरर्स और इन सब चीज़ ग्रामेटिकल रूल्स के साथ इन सब चीज़ों को जो है ना वो हम we formulate our sentences that what we have to speak. So is articulation. The third stage of speech production is articulation, which is the execution of the articulatory score by the lungs, glottis, larynx, tongue, lips, jaw, and other parts of the vocal apparatus resulting in speech. That in first two stages, conceptualization as well as in formulation, we have done our planning. That what we have to speak. First we made concepts in conceptualizations, then we formulated the sentence with its rules and regulations, grammatical rules. Now we are going to articulate and now we are taking help from our lungs, glottis, larynx, tongue, lips, jaw and other parts of the vocal apparatus resulting in speech. Now we are using that grammatical structure and those concepts and we are actually producing sounds. So this is a very whole process of speech production and we have talked till now about speech and then speech production. Speech means the production of sounds. Then there are some of the interconnected features of speech. First of all, we talk about articulation. Articulation means अल्फाज की अदायगी, how speech sounds are formed, how we make speech sounds using the mouth, lips and tongue. For example, we need to be able to say R sound to say rabbit instead of wabbit. That we are going to use, we need to be able to say the R sound. ठीक? तो उसके लिए we have to use our especially our respiratory system to exhale our exhale के सांस to take breath and then we exhale it and then we use our other speech related body parts. Fluency, the rhythm and the rate of speech. So fluency is sometimes repeat sounds or pause while talking. People who do this a lot may stutter. It includes that fluency, the rhythm and rate of speech, okay, that how we speak and how much we speak, that rhythm. If we are fluent, we speak very easily and very relevantly. That our all processes are conceptualization, formulation, articulation are working good. We speak very fluently, and it is very helpful for us to keep a rhythm of our language. But if our speech, but if we don't be fluent, the rhythm and rate of speech is disturbed, then we can't speak very aptly. So इसमें rate, prosody, fluent, smooth and relative free of disruptions. These are three components of fluency. That the rate यानी उसकी रफ्तार कितनी होनी चाहिए, prosody कि उसमें कितनी जो ना फसाहत के उसका जो भी हम बोल रहे हैं वो कितनी तरतीब के साथ और कितना साफ सुथरा और कितना अच्छा बोल रहे हैं. फ्लुएंट, स्मूथ एंड रिलेटिवली फ्री ऑफ डिस्ट्रप्शन जो है स्पीच, वो फ्लुएंसी में आती है कि जब आप बड़ी आसानी से जो है वो बोलते जाते हैं.
Then another very important interconnected part of speech, that is voice. That when we talk interconnected speech, we have to talk about voice. First we talked about frequency, which is the rate and rhythm. Now we are talking about voice, that जो आवाज़ आप तक पहुंच रही है, this is voice. How we use our vocal folds and breath to make sounds. So vocal folds are in our throat, which we use for producing sounds. Our voice can be loud or soft or high or low pitched. We can hurt our voice by talking too much, yelling or coughing a lot. That when we talk too much or yell or cough a lot, इसका मतलब है कि जब हम बहुत ज़्यादा बातें करते हैं तो भी हमारा गला थक जाता है। वो जो हमारे जो वोकल फोल्ड्स हैं और हमारा सांस जो है ना वो साथ नहीं दे रहा था, या हम बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं, येलिंग चिल्लाना, चीखना चिल्लाना, या हम बहुत ज़्यादा जो है ना किसी को खांसी लग जाती है, तो भी ये तीनों सूरतों में। तो वॉइस में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? वॉइस क्वालिटी, इट्स लाउडनेस एंड स्ट्रेस, और इट्स पिच, दैट के आवाज़, पिच मीन्स के आवाज़ बारीक है या जो है ना वो बहुत मोटी आवाज़ है, भारी भरकम आवाज़ है, मतलब भारी आवाज़, बैठी हुई आवाज़ जिसे हम कह सकते हैं। तो इस तरह की जो आवाज़ होती है उसको हम, तो उसकी पिच की क्वालिटी क्या है? तो वॉइस जो है ना वही है जो आप इस वक्त मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, तो ये वॉइस है। इसके लिए कितने जो है ना वो मतलब फंक्शंस ने काम किया है, कितनी हमने मेहनत की है, कितना हमें बोलना पड़ता है, तो ये सारा हमारी वॉइस क्वालिटी पर असरअंदाज होता है। So till now we have talked about speech, and without speech we can't understand language as well as communication and other disorders which are going to be talked in this uh, course, language and communication skills. So now we talk about introduction to language. So language is the comprehension and or use of a spoken. In spoken there comes listening and speaking, written, reading and writing, and or other communication symbols. For example, American Sign Language, Pakistani Sign Language. Language can be classified as receptive, it means listening and reading, and expressive, speaking and writing. So language is the comprehension of spoken, written, and other communication symbol system. You have to understand that language is just a system of symbols. For example, we write about something, and वी हैव टू यूज़ सम सिंबल्स। हमें पता है कि जनाब अगर हमने इंट्रोडक्शन ही लिखना है तो आई कैसे लिखना है, एन कैसे लिखना है, TRODUCTION, ये जितने भी अल्फाज अल्फ़ाबेट्स हैं, हरूफ तहज्जी हैं, ये हमने कैसे लिखने हैं। तो आप जो ना आई को जो है ना कुछ और लिख दें, एस लिख दें, एन को एम कर दें, तो आप देख लें कि इसका जो है ना इंट्रोडक्शन जो है ना इंट्रोडक्शन नहीं रहेगा, वो कुछ और बन जाएगा। तो जो हमें पता है कि आई हमने ऐसे ही लिखना है जैसा लिखा जाता है। अगर ऐसा लिखेंगे तो सारी दुनिया समझ सकेगी कि भाई ये इंट्रोडक्शन ही लिखा हुआ है। तो लैंग्वेज इज़ द कॉम्प्रीहेंशन और यूज़ ऑफ स्पोकन, रिटन एंड अदर कम्युनिकेशन सिंबल सिस्टम। इफ़ वी टॉक अबाउट कल्चर एंड सोसाइटी, तो उसमें भी कहते हैं कि लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ सिंबल। ये ऐसा जो है ना अलामतों का निज़ाम है कि जिसके ज़रिए हम जो है ना वो अपने जज्बात का इजहार कर सकते हैं। एक जो नस्ल है वो अगली नस्ल को जो मुख्तलिफ़ तरह के अपने जो कल्चरल ट्रेट्स हैं, अपना कल्चर जो है ना वो अगली नस्ल को सिर्फ इस सूरत में ट्रांसफ़र कर सकते हैं अगर वो अपनी ज़ुबान का उनका कोई निज़ाम है। तो लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ सिम्बल्स। वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ इट्स, that language is a system of symbol through which we can communicate, we can transmit our knowledges to others, we can transfer our thoughts and feelings to others.
सो लैंग्वेज जो है ना वो इसमें ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। तो स्पीच तो साउंड्स हैं सिर्फ, जबकि लैंग्वेज क्या है, ये एक निज़ाम है। तो चाइनीज़ के और होंगे, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स और तरह के हैं, उर्दू और अरबिक के लिए हमें और तरह से याद करने पड़ते हैं। तो ये सिस्टम ऑफ सिंबल्स हैं। So we talk about the definitions of language in this slide. Definitions of language. So this is a shared code or a conventional system of representing concepts through the use of arbitrary symbols and rule governed combinations of those symbols. The simple is that language is a system of symbols through which a community transfers its knowledge, its traits, its symbols, its values, its laws, and everything. So language rules means grammar. So that we have to follow some rules of that language. अगर आप उर्दू के ही जो ना अल्फाज आगे पीछे कर लें कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ या मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, तो आप इनके अल्फाज आगे पीछे कर लें तो मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता नहीं रहेगा, कुछ और ही हो जाएगा। तो वी हैव टू फॉलो सम रूल्स। हमें पता है कि जनाब हमने पहले जो ना वो सब्जेक्ट कहाँ पे आएगा, वर्ब कहाँ पे आएगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे आएगा। तो दीज आर रूल्स, वी हैव टू फॉलो दोज रूल्स एंड लैंग्वेज हैज़ दोज रूल्स. So language is generative, each utterance is freshly created. So it means language is generative, कि language जब भी होगी generate होगी, कि जब भी जो भी एक लफ्ज़ हम ज़ुबान से निकालते हैं वो हमेशा freshly created होता है, कि वो हमेशा उसी वक्त जो है ना वो हमारे जो है ना ज़ुबान से अदा होता है. Language is dynamic, changes over time. उर्दू, अरबिक, इंग्लिश, इनमें अल्फाज में जो है ना वो कोविड-19 का अगर हम इस वक्त लफ्ज़ जो है ना कितना सुन रहे हैं, तो ये इससे पहले नहीं था. ये डायनामिक है, इसमें चेंजेस आती रहती हैं. So here are some of the characteristics of language. So language is a means of communication. Language is arbitrary, यानी फिल फॉर उसी वक्त जो है ना वो जब भी कोई आप कोई भी बात जो है ना वो किसी वक्त करते हैं तो ये आर्बिट्रेरी है. कि ज़रूरी नहीं कि लैंग्वेज आपने पहले ही लिखी हो या पहले ही अदा हुई हो, आप हर लफ्ज़ को कई तरह से बोल सकते हैं. लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ सिस्टम्स, कि इसमें कई सिस्टम्स, कहीं अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, कहीं ग्रामर रूल्स आ रहे हैं, कहीं पर अल्फाज की बनावट की बात हो रही है, कहीं पर जो है ना वो अल्फाज की तारीख काम आ रही है. तो ये जो है ना सिस्टम ऑफ सिस्टम्स, I think this should be language is a system of symbols. So we may correct it that language is a system of symbols. So language is primarily vocal. That शुरू में सिर्फ जो है ना वो ज़ुबान बोली ही जाती थी. अब आहिस्ता आहिस्ता हमने लिखना भी शुरू कर दिया, सुनना भी शुरू कर दिया, बोलना भी शुरू कर दिया. सो अब तो इसके कई फॉर्म आ गई है ना. पहले सिर्फ बोली जाती थी, प्राइमरली वोकल, कि हमें बोलनी पड़ती है. Language differs from animal communication, that they can't speak, they have some sounds, their own system of symbols, we can't understand that. Language is a form of social behavior, so this is a form of social behavior. That behavior is that something which is apparent to us, जो हमें नज़र आता है. So this is a social behavior, form of social behavior. तो जो अच्छी ज़ुबान बोलते हैं हम उनकी जो है ना बहुत इज़्ज़त भी करते हैं, उनकी बहुत तारीफ़ भी करते हैं. अब उर्दू बोलने में जब भी नाम आता है, ज़िया मुहिद्दीन साहब का नाम आता है कि वो इतना खूबसूरत उनका लहजा है. और इफ़ वी टॉक इन इंग्लिश देन ऑलवेज टीचर से दैट लिसन BBC, CNN एट्सट्रा. तो लैंग्वेज हमेशा बोलने से आएगी, और ख़ासकर द एक्सेंट ऑफ द वेस्टर्न्स हु स्पीक इंग्लिश. So we have to learn that language, learn that system of symbols. Language is a symbol system. So here we talk about again about the system of symbols. So language is a symbol system. So here are some of the
Properties of language. So language is a social tool. सोशल टूल इज़ लाइक दैट कि आप जो है ना वो अपने कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने थॉट्स फीलिंग्स. हमें जितना लिटरेचर मिल रहा है उर्दू में, इंग्लिश में, संस्कृत में, पंजाबी में, पश्तो में, बरहावी में, बलोची में, किसी भी ज़ुबान में, तो वो एक सोशल टूल के तौर पर ही इस्तेमाल हुई है ज़ुबान. एज अ शेयर्ड कोड, लैंग्वेज enables यूज़र टू ट्रांसमिट आइडियाज़ एंड desires to one another. So this sentence clears the heading language is a social tool. So language primary purpose is to serve as the code of transmissions between people. That if I know Urdu and a Pashto speaking person knows Urdu, we can communicate very easily. And if we are in any Western country and I know English, then I can communicate with those persons very easily. So language reflects the collective thinking of its culture and in turn influences that thinking. To consider language without communication is to assume that language occurs in a vacuum. To consider language without communication is to assume that language occurs in a vacuum. So language without communication, that if someone is not getting that message which is being presented in that language, that can't be helpful in any situation. So that language occurs in a vacuum, कि वो खला में फ़ज़ा में ही बात रह जाएगी, वो बात दूसरे तक पहुंच ही नहीं सकती जो कि विदाउट कम्युनिकेशन जो अपना मतलब ही नहीं बयान कर सकी. सो लिटरेचर, जो किताबें हमें ज़्यादा समझ आती हैं, जो चीज़ें हमें ज़्यादा समझ आती हैं, हमारी ज़्यादातर ख्वाहिश होती है कि हम वही किताबें पढ़ते रहें. उसकी वजह यह कि उनका राइटर, उनका ऑथर, उनका मुसन्निफ़ वो अपना मैसेज जो ना वो कम्युनिकेट कर पा रहा है, इसलिए हमें समझ आ रही है, इसलिए फिर हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि अच्छा ये जो है ना वो बड़ी अच्छी और बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है जो हमें समझ आ रही होती है. उसकी वजह यह है कि उसके राइटर ने हमसे कम्युनिकेट कर लिया है. लेकिन एक दूसरी तरफ वो किताबें, वो मटेरियल, वो लेक्चर्स हमें समझ नहीं आ रहे होते जहाँ पर हम प्रॉपर कम्युनिकेशन गैप रह जाता है. सो लैंग्वेज इज़ अ सोशल टूल. Language is a rule governed system. So there are some of the rules. So we have to follow those rules. And if we don't follow those rules, because there is a relationship between meaning and the symbol employed in an arbitrary one, that there is a relationship between the symbol and its meaning. That if we talk about the word written A, so we have it's have a sound like A, and the words with which start with A have this relationship between its meaning and symbols. But the arrangement of the symbols in relation to one another is non-arbitrary. So we have to follow some rules. So there are some rules और पैटर्न्स दैट अकर रिपीटेडली, और जो हमें अल्फाज की बनावट जैसे सी यू टी कट, बट एट्सट्रा, ये अल्फाज जो है ना हमें इसीलिए हमें पता है कि अगर सी यू टी कट है तो बी यू टी बट है, तो हम नॉर्मली वी फॉलो दीज बिकॉज वी नो दैट द स्पेलिंग पैटर्न इज सेम. देयर इज सम रूल्स. These shared rule systems allow users of a language to comprehend and to create messages. So we find it easy to comprehend the messages of those words. Language is generative. It means that we generate it. So language is a generative system. The word generative has the same root as generate, which means to produce, create, as in Genesis, or bring into existence. So language is a productive or creative tool. And if we know the rules, we can produce or create very easily our message that we can transfer to others, such as nouns and
finite set of rules. Speakers can create an almost finite number of sentences that if we know the rules and we are going to write an essay, so we write that essay very easily and very comprehensively, and because we know the rules that how to generate meaningful utterances and meaningful written material, and we use very diligently that process. So language is generative. This is also the quality of language. So if we talk about questions, so you may have questions of this, and I will answer inshallah those questions as well, or others. So this lecture is very important for becoming, for making a base of yours in this for this subject, language and communication skills. And this is significant for children with special needs, that we, if we know about the language and communication skills, and about the speech and language, we may easily help our children to understand the language and communication skills and their issues. So in previous lecture, as we discussed the course outline and the subject overview, in this lecture I have tried to uh, make understandable the topic of introduction to speech and language, because this is the base of our subject. So I felt need of presenting this lecture. So hope so that you have listened it, and you will listen it, and you comprehend the speech and language concepts, and you may take help from YouTube, Google, and I tried my level best to present you the best material regarding speech and language, and we will also take help from our co-teachers regarding this lecture, inshallah. So thank you.